Alright, G, we were discussing about the calculation of the Doppler's effect. So, in the case of Doppler's effect, what we witness, it is having a formula which is known as F naught is equals to Fs multiplied by V divided by V plus minus Vs. So, either at one time it is going to be plus or at one time it is going to be minus. So, do remember what are the different variables present in this formula. F naught is called as the frequency of the sound which is observed by the observer. Fs is the frequency of the sound given out by the source. Vs is the speed with which the source is moving, like the way we saw an ambulance. So the speed of the ambulance will be called as Vs. And what is V? V is the speed of sound. Let's say sound air में move कर रही है, तो वो कितनी speed से move कर रही है, that will be V. So these are the four parameters you should be knowing about them. So what are the four parameters we are having? F naught, Fs, V, and Vs. F naught, Fs, V, and Vs. So people, can you let me know what is F naught, what is Fs, what is V, and what is Vs? Yes, can anyone tell me? Please try to make the class interactive. Answer my question. What does the term F naught means? What is Fs? What is V and what is Vs? Hurry up, please speak up. The observed frequency F naught है, ठीक है. Fs है emitted frequency, हाँ जी. uh, Frequency emitted by the source है. और V है wave speed yes, V is the velocity of the wave speed कह लें, ठीक है. And what is Vs? और Vs relative velocity. No, Vs is the source velocity. Vs is the source velocity. सर Doppler effect relatives नहीं होगा? बेटा रिलेटिव तो होता है. रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? V प्लस वी एस या V माइनस वी एस रिलेटिव वेलोसिटी है. ठीक है, V प्लस माइनस जो आप कर रहे हो ना, ये जो नीचे वाला बॉटम पार्ट है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है. V प्लस माइनस वी एस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है? द डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. तो Vs रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है. Vs इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स. जिस तरह मैं एग्जांपल ले रहा था कि आपकी एक एम्बुलेंस है, वो सायरन बजा रही है, वो साउंड सोर्स अपने साथ लेके चली और एम्बुलेंस मूव कर रही है ना. तो डॉपलर इफेक्ट होता ही तब है जब एक बंदा स्टेशनरी और दूसरी सोर्स है वो मूव कर रही हो, या वो उसकी तरफ आ रही है या उससे दूर जा रही है, तभी डॉपलर इफेक्ट महसूस होगा. सो व्हेन द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स यू, frequency increases, wavelength decreases. When sound source is moving away from you, frequency decreases, wavelength increases. ठीक है. तो ये Vs उसमें क्या है कि कितनी स्पीड से सोर्स मूव कर रही है. यानी कि एम्बुलेंस की अगर एग्जांपल लूं, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट एम्बुलेंस, या व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सायरन विच इज रिंगिंग. आर यू गेटिंग? तो Vs इज द सोर्स वेलोसिटी. तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास हैं जी डॉपलर्स इफेक्ट फाइंड करने के. वन इज एफ नॉट इज इक्वल टू एफ एस इंटू वी डिवाइड बाई वी प्लस वी एस. अनदर वन इज एफ नॉट इज इक्वल टू एफ एस इंटू वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस. इसका एक क्वेश्चन मस्ट आता है आइदर इन योर एमसीक्यू पेपर और इन योर स्ट्रक्चर्ड पेपर. सो बड़े ध्यान से इसके क्वेश्चंस को और चीजों को समझिएगा. ये फॉर्मूला समझ आ गया? कौन मुझे बताएगा व्हेन डू वी यूज द V प्लस वी एस फॉर्मूला? यस, कैन एनीवन टेल मी what is the scenario when we are using V plus Vs formula? When the source is moving away. V plus Vs, V plus When the Vs is source is used moving when the towards source you. is moving away.
and V minus Vs is used when source is moving towards. ठीक है बच्चों? चलो जी, let's apply this formula to different examples and questions. So जी, question कहता है a police car siren emits a sound wave with frequency of 450 hertz. शाबाश बच्चों, बताओ ये frequency कौन सी frequency होगी? Will it be F naught or will it be FS? वो कहता police car siren emits a sound wave with a frequency of 450 hertz. Is it FS or is it F naught? बोलिए. FS. This is going to be Fs. So we are having our first value. It is Fs is equals to 450 hertz. Next it says the car is traveling away from the observer. If it is saying away, तो हमारे पास कौन सा formula use होगा? F naught is equals to Fs into V divided by V plus Vs. This is the formula we are going to use. We are going to use the denominator with positive as it is moving away. What next is there? It is moving away from an observer at a speed of 45 meter per second. Okay, people tell me, will this speed be Vs or is the speed is V? Tell me, is the speed is V or Vs? VS. It will be Vs, the speed of the source. Its source is what? Source is car. So the speed of the car is 45 meter per second. It will be considered as Vs. So what is the value of Vs we are having? The Vs value is 45 meter per second. And what is the speed of sound is given to us? So the speed of sound will be taken as what? Is it V or is it Vs? Hurry up, speak up. The speed of sound will be V. taken as what? It will be taken as V. V. So let's plug in the value और हमने find क्या करना है? वो कहता है frequency of the observer find करें. Observer ने जो frequency heard की है वो कितनी होगी? That is known as F naught. तो शाबाश, हम इस पे formula apply करते हैं. F naught is equals to what is that? Fs 450. What is the value of V? The value of V is 340. Whole divided by what is V? V is again going to be 340. And what is Vs? It is 45. तो इस पूरे रिलेशन को हम सॉल्व करेंगे and we are going to get the observed frequency. Your answer is probably going to appear as 397 hertz. This will be your answer. जी बच्चों बताओ, is this understandable? G. People please speak up. Hello. Yes, sir. Why only 2 to 3 students are just responding? Where are the rest of the kids? Please acknowledge करें ताकि मुझे understand होता रहे कि are the things getting clear or not. Okay. Let me move to the next example. Next example is just similar to the previous one. So let's see इसमें है क्या. Again, there is a police car which travel towards a stationary observer and it moves with a speed of 15 meter per second. तो ये कौन सी speed होगी बच्चों? Is this Vs or is this V? बोलिए. Speed of 15 meter per second. हरी आप प्लीज साथ साथ बोलते जाएं ताकि we can wrap it out quickly. VS. It is VS. Vs. So Vs value will be 15 meter per second. And question says the siren on the car emits a sound of frequency of 250 hertz. तो ये जो frequency of 250 hertz है ये कौन सी frequency है? Is this observed frequency or is it the frequency of the FS. source? Yes, it is Fs. It will be equals to 250 hertz. Question says calculate the observed frequency. तो हमने F naught निकालना है. And वो कहता है the speed of the sound is 340.
सो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 340 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं। अब इसमें हमने एक चीज गौर करनी है, वो क्या कह रहे हैं, द सायरन बेसिकली हो क्या रहा है, a police car travel towards a stationary observer। तो जब towards आ रहा होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, F नॉट, minus V. yes, F नॉट इज इक्वल्स टू Fs into V divided by V minus Vs। तो Fs आपके पास क्या आ जाएगा 250, V आ जाएगा 340, फिर आ जाएगा 340 माइनस व्हाट इज Vs 15। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर F नॉट। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आवर आंसर विल बी 460 हर्ट्ज। यस स्टूडेंट, इज दिस अंडरस्टैंडेबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, शैल आई मूव ऑन? Yes, sir. यस मोहित, पोलराइजेशन मेरा टारगेट है, कल करवाऊंगा, ठीक है, आज सिर्फ हम डॉपलर इफेक्ट ही करेंगे। ओके, ये एक और क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगेन ये एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है। वो कहता है द साउंड एमिटेड फ्रॉम द सायरन ऑफ द एम्बुलेंस हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज। जी स्टूडेंट्स बताएं, इज दिस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट और एफ एस? ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इज दिस फ्रीक्वेंसी एफ एस और एफ F, नॉट? sir. हाँ, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज एफ एस, and this fs frequency is equals to what value? It is equals to 1500 hertz. And next it says the speed of sound is 340. So what is the value of v? 340 meter per second. वो कहता है calculate the difference in frequency heard by a stationary observer as the ambulance travels towards and then away at a speed of 30 meter per second. So what is the vs? Vs is 30 मीटर पर सेकंड। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो जब सबसे पहले वो अवे जाएगा तब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। व्हाट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, एफ नॉट इज इक्वल्स टू एफ एस इंटू वी ओवर वी प्लस वी एस। ठीक है, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी बन जाएगी 1500 मल्टीप्लाई बाय 340 होल डिवाइडेड बाय 340 प्लस 30। जी बच्चों, कोई मुझे बता सकता है व्हाट विल बी इट्स आंसर? 1500 इंटू 340 होल डिवाइड बाय 340 प्लस 30, ये क्या आंसर आएगा? Yes, can anyone tell me the absorbed frequency what I'm going to get over here? Please use your calculators. 1378. 13, is it the frequency 1378 coming? 1378 hertz? Yes, sir. Okay. Next, when it is moving towards, when any sound source is moving towards, what formula I'm going to use? F naught is equals to Fs V whole divided by V minus Vs, right? When a sound source is moving towards us, it will be written as V minus Vs. So what is V minus Vs? V, इसको हम लिखते हैं 1500 into 340 whole divided by 340 minus 30. Can anyone tell me what this observed frequency will be known as? 1645. 1645. 1645. Okay. So what will be the difference of both the frequencies? So difference क्या आ जाएगा आपके पास? Difference में इन दोनों को माइनस कर देंगे। 1645 minus 1378. Yes, guys, can you tell me what will be the answer when we are going to take the difference of 1645. 1645 minus 1378? क्या आंसर आएगा?
Yes, hurry up. Tell me the answer for 1645 minus 1378. 267. 267. 26. Hurry up. Speak up. What is this? 26? It will be 267 hertz. Okay. So this is how this question is to be solved. Okay. There's another exam question. Again, what is asked in this question? Describe Doppler's effect. So how you are going to define it for 1 mark? Doppler effect is actually the apparent change in the frequency of the sound wave due to the relative motion of the source and the observer is known as Doppler's effect, right? अब इसमें क्वेश्चन आपने फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि a car travels with a constant velocity along a straight road. The car horn with a frequency of 400 hertz is sounded continuously. So the car horn frequency कितनी है? इसको fs कह देंगे, which is 400 hertz. Then a stationary observer on the roadside hears the sound from the horn at a frequency of 360. So we are having an observed frequency, and this observed frequency is what? 360 hertz. Speed of sound is how much? 340. And the value of V is what? 340 meter per second. Question says determine the magnitude of V and the direction, the velocity of the car relative to the observer. तो जी प्लीज मुझे टेल मी, क्या हम इन दो फ्रीक्वेंसीज को देख कर ये बता सकते हैं whether the car is moving towards or away from the observer? Yes, can anyone tell? If the observed frequency is less than the source frequency, what it means? Is the car moving towards or is it moving away? Away. Yes. So frequency decreases because observed frequency is decreasing. So this is a case of moving away. This is a case of moving away. This is a case of moving away. Okay, when it is moving away, so what will be the formula we are going to use? F naught is equals to Fs V whole divided by V plus Vs. So we are going to plug in the value in this formula and हमारा answer आ जाएगा. F naught is equals to, what is Fs? 400. What is V? 340 over 340 plus Vs. अच्छा, instead of F naught, what we are going to write? Instead of F naught, we are going to write 360. तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Vs की. यस, कोई बता सकता हाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Vs? Yes, can anyone tell the value of Vs, what it will be? $38. 38. So आप लोग Yes. ये जी बताइए क्या आंसर आ रहा है? Is it 38? जी, is it so? Hello. Yes, sir. Okay, so you can take the picture of the last part. ये last part की picture आप ले लें और ये आपका homework है, ये आपने खुद solve करना है. A car is travel at a constant speed towards a stationary. तो towards वाला formula इसमें लगेगा और आपने क्या फाइंड करनी है? आपने स्पीड ऑफ द कार फाइंड करनी है, यानी कि वीएस आपने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में. तो इसको खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर लीजिएगा, राइट?
So this is it from the Doppler's effect. So we are going to stop here for today. और इंशाल्लाह कल हम एक और क्लास करेंगे. In that class we will be discussing about the